ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਜੀਐਸ ਅਪਡੇਟਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਜਮਾਤ 8ਵੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰਮ 2 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਵੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बोर्ड सैंपल पेपर फुली सॉल्वड क्लास 8th सब्जैक्ट सोशल साइंस। सो पार्ट ए तो स्टार्ट करते हाँ। मैं तुहानूं दस देवां सारे प्रश्न बेहद जरूरी हैं तो नाल ही विद्यार्थियों की डिमांड के उपर इंग्लिश मीडियम के विच फुली सॉल्वड सैंपल पेपर लैके आया गया है। सो पार्ट ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, ईच क्वेश्चन इज़ ऑफ 1 मार्क। सो क्या गया है कि वन वर्ड या फिर वन सेंटेंस के आंसर करना है तो हर एक प्रश्न 1 अंक का है। क्वेश्चन पहला, वॉट डू यू मीन बाय नैचुरल डिजास्टर्स। आंसर, नैचुरल डिजास्टर्स आर अर्थक्वेक, वोल्केनिक एक्टिविटी, सुनामीज, फ्लड, साइक्लोन, लैंडस्लाइड्स, एवलांचेस एंड ड्रोट्स। सेकंड क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सो आंसर है द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन थर्ड, हाउ मैनी मेंबर्स प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट इन दी राज्यसभा। सो आंसर है 12 मैंबर। इसी ਤੁਹਾਡੇ पार्ट ए ਦੇ क्वेश्चनस ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ आंसरस। नैक्सट पार्ट बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 to 30 वर्ड्स, ईच क्वेश्चन इज़ ऑफ 2 मार्क्स। सो क्वेश्चन पहला, वेयर आयरन ओर इज़ प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। सो आंसर्स ने जमशेदपुर, बोकारे, सिंहभूम एंड उड़ीसा। क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक। सो आंसर है द शेकिंग ऑफ द अर्थ इज़ नेम्ड एज अर्थक्वेक। द स्पीड और इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड ऑन रिचटर स्केल एंड मार्कलिस स्केल। क्वेश्चन थर्ड, what is cyclone, by what other names is it called। so answer है the cyclone are the fast blowing winds, there are various other names of it, example hurricanes, typhoons, storms or whirlwinds। क्वेश्चन फोर्थ, दोस्तों अगर आपका भी सपना है नीट क्रैक करने का और आप अपने सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो अनअकैडमी लेके आया है सभी टॉप एजुकेटर्स को अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। सो जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा एनहेंस होगी एंड बहुत ही इजी वे में आपको एग्ज़ाम्स की फुल प्रिपरेशन करवाई जाएगी। एंड साथ में नीट यूजी 2022 की डेट्स भी अनाउंस हो चुकी हैं। सो हमारे पास बहुत कम समय बचा है नीट यूजी 2022 की प्रिपरेशन के लिए। सो मेक दी बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम विद टर्बो 15 टेस्ट सीरीज़। सो अनअकैडमी लेके आया है टर्बो 15 टेस्ट सीरीज़, जिसके आपको कई बेनिफिट्स होंगे। लाइक नीट यूजी प्रिपरेशन के लिए आपको टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि क्यूरेटेड होंगे टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। डेली प्रैक्टिस होगी नीट यूजी 2022 एंड 2023 के लिए। एंड हर हफ्ते टॉप परफॉर्मेंस को अनअकैडमी गुडीज़ मिलेंगी। सो जी हाँ, ये हैं कुछ बेनिफिट्स टर्बो 15 टेस्ट सीरीज़ के लिए। सो हर दिन ये 7:30 PM पे स्टार्ट होगा, जिसमें आपको 30 मिनट्स मिलेंगे एंड 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे। सो जिससे आपकी प्रिपरेशन नीट यूजी 2022 के लिए और ज़्यादा एनहेंस होंगी। सो जल्दी से एनरोल कर लीजिए फ्री में, मेरा कोड GS अपडेट्स यूज़ करते हुए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो जल्दी से एनरोल कर लीजिए। राइट डाउन द इफेक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशनल सिस्टम। आंसर है ड्यू टू ब्रिटिश एजुकेशन मिनिस्ट्रियल कल्चर केम इन एग्जिस्टेंस इन इंडिया। ड्यू टू एक्सपेंसिव एजुकेशन मोस्ट ऑफ द इंडियंस रिमेन्ड इलिटरेट। इंडियन लैंग्वेजेस कुड नॉट डेवलप। ड्यू टू वेस्टर्न एजुकेशन प्रिवेलेंट सुपरस्टिशन could be removed। Due to Western education, Indians have studied the history of other countries and contributed to independent the country। More and more people participated in national movement। So इसी टोटा क्वेश्चन फोर्थ का आंसर। क्वेश्चन फिफ्थ, ड्यू टू whose efforts the system was declared illegal। आंसर,
The Sati Pratha was declared illegal in 1829 AD by the Governor General Lord William Bentinck. This law was passed by the efforts of Raja Ram Mohan Roy. ये सी प्रश्न पंजवें का उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ, राइट डाउन वाई वीर सलीगम इज कॉल्ड द प्रोपेट ऑफ मॉडर्न आंध्र प्रदेश। राइट डाउन इन ब्रीफ। सो आंसर है वीर सलीगम इज सेड टू बी द प्रोपेट ऑफ द सोसाइटी ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉर हिज लाइफ टाइम सोशल सर्विस। He made great contributions for the improvement in society and he struggled for the lower caste. He preached to end caste system through articles and plays. He always helped the lower caste and the poor people. He struggled against the practice of child marriage. His legal status too I made several attempts to get the widow's illegal status to legal recognition. सो इसी ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन 6 ਦਾ आंसर। क्वेश्चन 7th, what do you mean by colonialism? आंसर है colonialism is meant to annex one country by another country or countries socially, economically or politically. क्वेश्चन 8th, who are legal advisors? सो आंसर है legal advisor is a law who fights the case on the behalf of the court. Question 9, what are criminal cases? Answer, criminal cases are those cases which are related to fights, disputes and criminal activities. If there is physical injury, damage to any part of the body, such cases are considered as criminal cases. Question 10th, how does illiteracy affect the democracy? So first है illiteracy is the root cause of all social evils and illiteracy affects the democracy in many ways, like illiterate people can easily be misguided. Next, it is a hindrance in the success of democracy. It is a blockage in upliftment of people. The fifth, illiterate people cannot use their fundamental rights properly. Illiteracy is a disgrace on our society. ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟ ਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन पेपर सैट किया जाएगा। सो पूरा पैटर्न भी नाल नाल तुसी नोट कर सकते हो। नैक्सट तुहाडा पार्ट सी शुरू हो जाता है। आंसर एनी 3 आउट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द कॉटन प्रोडक्शन इन पंजाब। इन पंजाब BT cotton seed variety of cotton is giving good results. Cotton is known as white gold in Malwa region of Punjab. Bathinda, Faridkot, Firozpur and Sangrur are important cotton producing districts of the country. Punjab and Haryana states together produce about 28% of country's cotton. Question second, write about protection of tea and coffee plants. Answer, tea plant protection. Tea plants are planted on the cleared slopes. Use of fertilizers become necessary for the proper development of plant. The rainfall should be distributed uniformly throughout the year. The rainwater should also not stand in the roots of the plants. Tea plants need pruning for its proper growth. Coffee plants protection. Once planted, these plants, they continue to bear fruits for 30 years. The coffee plants also require fertilizers, pruning and irrigation from time to time. Hot and sunny weather is required at the time of germination of plants and ripening of seeds. The height of coffee plant is kept about 8 feet. Next, question third. Write a note on Quit India movement. Answer,
On August 8, 1942, Gandhi ji passed the proposal of the Quit India movement and organized a special session in Bombay. The reason for this war was in Second World War. England was fighting against Japan, so Japan decided to attack India because British ruled over India. So Gandhiji thought that if the British left India, then Japan would not attack India. Gandhiji called this movement the last battle of his life and gave the slogan to people to do or die. The government arrested Gandhiji and other Congress leaders on August 9, 1942. In response to the news of the arrest of these leaders, people got hurt in police stations, government buildings, post offices, and railway stations, etc. But the English could not succeed in suppressing the protesters. Next question, fourth. Write a note on communalism. Answer: India is a secular country. People of all religions live here who have different religious beliefs. This has generated communal riots. Of these, the incident in Gujarat in 2002 was the most fierce event. Many people think that government needs to pay attention to low income people. Therefore, at the time, Prime Minister of India Manmohan Singh has said in his speech on December 9, 2006, we will plan to change our planning to give the small portion of the country's development outcome. Question fifth. Write a literal meaning and composition of parliament. The word parliament is derived from the French word parler, which means to have conversation. Thus, parliament is a place where we come together to converse and discuss the national and international issues. Parliament is that system of governments in which both the executive and the legislative organs of the government work in close relationship. All members of the executive body are selected from the members of the legislative assemblies, and they remain in office till they enjoy the support of legislative assembly. Parliament consists of two houses: Lok Sabha, House of People, lower house, and Rajya Sabha, upper house. ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟ ਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਸਡ ਔਨ ਸੋਰਸ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੀਡ ਦੀ ਅਬਵ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਐਂਡ ਆਂਸਰ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਫਸਟ, ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਪਰਪਜ਼ ਆਫ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਬੰਗਾਲ? ਆਂਸਰ ਹੈ ਟੂ ਕੋਜ਼ ਅ ਰਿਫਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਐਂਡ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮਸ ਐਂਡ ਟੂ ਵੀਕਨ ਦੈਮ। ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਕਿੰਡ, which movement was launched as the protest of division of Bengal? Swadeshi movement. Question third, which two parties were established in Congress? Answer है extremist party and moderate party. सो इसी ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਰਟ ਡੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟ ਈ, ਸ਼ੋ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਲੇਸਿਸ ਇਨ ਦੀ ਮੈਪ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ 8 ਪਲੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ 5 ਜੋ ਪਲੇਸਿਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੋਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ ਆਇਰਨ ਔਰ ਏਰੀਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗੋਲਡ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਮਿਕਾ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਮੈਗਨੀਜ਼, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੋਪਰ, ਵੀਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਏਰੀਆ, ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਏਰੀਆ ਐਂਡ ਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਏਰੀਆ। ਸੋ ਇਹਨੇ 8 ਸਥਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰਕ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਫੁੱਲੀ ਸੌਲਵਡ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਜਮਾਤ 8ਵੀਂ, ਸਬਜੈਕਟ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸ ਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਨੈਕਸਟ ਤੱਕ ਲਈ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟਾਟਾ, ਧੰਨਵਾਦ।